guys, what is my name is Hassan Asif and I'm Ahmad Latif. and you are watching Spontaneous Reacts. So guys, आपकी क्या हाल चाल है, कैसे हो, तगड़े हो, फिट फाड़ हो, अभी तगड़े हैं। तो ऐसी मतलब आपने टाइटल से अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कौन सी वीडियो होने वाली, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं 8 days in real India. So अहमद, तो ये दो इंडिया है, एक फेक है, एक रियल। रियल इंडिया से मुराद मॉडर्न इंडिया। हाँ, आई थिंक ये वो चीजें होंगी कि जो अच्छी चीजें हैं इंडिया में जो आप एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, एक्सप्लोर करेंगे 8 दिनों के अंदर जो लोगों को मोस्टली दुनिया में नहीं पता, इसलिए इन्होंने रियल इंडिया शायद टाइटल यूज किया। फॉरेन कंट्री का बंदा है जो कि एक्सप्लोर करेगा। अच्छा, 8 दिनों के अंदर। ओके, मतलब पूरा इंडिया दिखाएगा इस तरीके से, कवर कर दिखा तो नहीं सकता वैसे 8 दिनों में, इतना इंडिया छोटा नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से शायद कोशिश करे, देखते हैं इसकी कोशिश। अच्छा यार अहमद, आज आपका दिन कैसे गुजरा? व्यूअर्स को बताएं भाई। आज मोस्टली हमारा दिन पे सो ही गुजरता है। आज भैया ना हमारे दोबारा यहाँ पंजाब में लॉकडाउन लग गया, पाकिस्तान लॉकडाउन लग गया, तो अभी ईद से बाद तक लॉकडाउन रहेगा, सारा शॉप्स मार्केट्स बंद। हालांकि केसेस बहुत कम हो गए हैं पाकिस्तान में, और इंडिया में यार जो है मैंने सुनने में काफी ज्यादा हो रहे हैं। 50,000 एक दिन में उनके सामने आए। इंडिया आज या मेरे कल आए। तो ऐसे ही है यार, भाई घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी एहतियात बेहतर है, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, तो ये ध्यान में रखें। रात को यार उन्होंने मिडनाइट को कहा था कि फिर मार्केट सारी बंद हो जाएगी। ये कल ही उन्होंने सुबह उन्होंने मार्केट्स खोले, तो उसका भी आज सुबह मार्केट्स यहाँ पे खुली है पंजाब में, और पुलिस ने फिर धोया सबको। मार्केट ने बंद करवाई है, दुकानदारों को भाई ठोका है और भगा दिया। 4 घंटे का इवन के टाइम भी दिया था यार, आप लोग बंद कर लो। ये सीन हुआ है भाई यहाँ पे, तो एसी ने भी आगे मारा। एसी हमारा एसी डीसी, इनके मतलब इंडिया में कुछ और होते हैं, बांग्लादेश में भी शायद कुछ और होते हैं, इनको कुछ और कहते हैं। हमारे एसी डीसी होते हैं जो मतलब बहरहाल पता नहीं क्या कहते, मुझे याद था, मुझे भूल गया। इनके होते हैं यार यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, वही ना, हमारे सीएसएस होता है, इनका वो होता है उनका यूसी। बस वीडियो करें, स्टार्ट करें। तो यार वीडियो गाइस लंबी हो रही है, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे और अहमद लतीफ को दें इजाजत नहीं, वीडियो स्टार्ट करके तो देख गई भाई, आज इतनी जल्दी इजाजत नहीं दे, वीडियो भी देखें, स्टार्ट करें भी काउंटिंग साथ। हां यार करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। इंडिया यार, कश्ती। I have just arrived to India. इतनी आवाम इकट्ठी करके आए इंडिया। A country you might think is poor, but is actually rich with people. There are 1.3 billion of them. With culture, they have more than 1 million gods. And so many religions, even cricket is considered one. Rich with symbolism. So many dances for so many occasions and festivals. With food, flavors, and color. India is rich, and for the next 20 days, my goal is to become as Indian as possible. Whoa. So I'm turning vegetarian like many of them. This is my last piece of meat. I'm dressing up with more colors, and I'm trying my shot at their religion, cricket, unsuccessfully so. If in the next 20 days I can capture 1% of India's magic, then I'll be rich just like them. Hey, I hope you enjoyed this video. My name is Tony and I helped edit the video. We have 7 more amazing videos about India coming your way. But first, let me tell you a secret, and please don't tell Nas. Editing takes hours, and sometimes I get bored, so I play games, and this game sponsored the whole video. It's called Raid Shadow Legends. This RPG game has amazing graphics that will teleport you into a world of fantasy, and you can play completely for free. Raid has 16 different factions to choose from, orcs, dwarves, and many more. What I love about this game is that it allows for so many different kinds of play styles. You can play risky and go all offense, or play it safe and use defense champions. My mains are usually the High Elves. They have some of the strongest and smartest characters around. Take a look at Ethos. He's a legendary champion that can attack all of his enemies at once with a giant blow. Destroy the enemy. Also, look at the graphics and details on his shield. This is insane. There's also online tournaments, local and global, so that you can battle with your friends and win amazing rewards. Wanna play? Click on the special link in the video description to download Raid to your mobile phone or PC to get 100k silver, 50 gems,
10 mystery shards, and 1 champion for free. Slasher. You will find extra rewards here in your inbox for the next 30 days only. Okay, my break is over. I gotta get back to editing. Enjoy the beauty of India. India. Very like it. One of the best parts of Indian culture is an Indian wedding. So today I decided to fake marry my actual girlfriend in an Indian wedding. Here's how our Indian wedding went. The day before, we got the hang of the jewelry and the fancy clothes and invited all of our Indian friends. On wedding day, I, the groom, arrived on a beautiful horse, surrounded by good-looking friends and lots of fireworks and music. And then I waited for my bride to arrive. She arrived on a boat, then was carried by 4 men to meet her new husband. Together, we performed Hindu rituals to unofficially become husband and wife. And from that point on, our Indian wedding began. With amazing food, dance, and music. It's true, our wedding was not real, but the richness of Indian culture, weddings, and people are as real as they get. Yesterday, Alina and I had a wonderful day pretending to get married to show you the beauty of Indian weddings. But underneath all of this lies the bitter truth. People like her and I are not supposed to get married. We have different religions, different age, skin color, and income. In India, we would fall in 2 different castes. And in the caste system, you're only supposed to marry the ones who are like you in terms of religion or social status. If they're not, then you're in trouble with your parents or society. It almost feels like society expects me to marry her parents, religion, money, or career, and not her. As if your loved one's personality or humanity doesn't matter. This is not just India, it's all around the world, even where we come from. Reality hurts. For every marriage that takes place, remember, there are tens of others that don't. That's 1 minute. See you tomorrow. Favorite part aa gaya hamara. I've always wanted to become a vegetarian, but in countries like Brazil, Philippines, and Nigeria, it's very difficult to be one. They just love to eat meat. In India, it's easier than ever to be a vegetarian. Entire menus and restaurants are dedicated to vegetarian food. Meat is replaced with cottage cheese, and it tastes just as good, if not better. Even McDonald's has no beef hamburgers. This is made of vegetables. For actual vegetarians, it's like heaven on earth. All of this because in Hinduism, a cow and its meat are considered sacred. That's why cows roam the streets for free and everyone respects them. Sure, you will find meat in India, but Indian food has managed to be exceptionally good without depending on meat. That's why in India, I'm becoming a vegetarian. What you see behind me is real fire eating human corpses, because I've just arrived to the city of Varanasi, where people come to die. It's the holiest city in Hinduism. It lies on the banks of the Ganges River, where millions wash their sins away by bathing in its water. And when you enter that holy river, it's like a whole new world. It will make you pure again. And if you die near Ganges, you will attain the moksha, the eternal liberation. That's why at the end of their lives, people come to die here. At Varanasi, you will find daily rituals to pray for the river god. Here, you'll find daily cremation of bodies. You'll even find extremist agoris who eat the dead corpses and wear their bones. Varanasi is a spiritual powerhouse. It's one of the most raw, human, chaotic places I've seen. Yet I found it to be the most peaceful one yet. That's 1 minute. See you tomorrow. Hi, I have just arrived to an engineering school in India
where 1.4 million students apply every year. Yay! But only 10,000 of them get in. That's an admission rate worse than Harvard and Stanford. It's the IIT engineering school in India, a country where millions aspire to become engineers. Because in India, people are smart. Ancient Indians invented the digit 0 and could predict planet position. Modern Indians, they could solve a Rubik's Cube 3 times by the time you finish watching this video. They could run companies like Google and Microsoft because the CEOs are both Indian. Inside the dark alleyways in India, you'll find beautiful technology offices where people are trying to code the next Amazon or Google. With 1.5 million engineers graduating every year, it's only a matter of time until the next Mark Zuckerberg is Indian. That's in minutes. See you tomorrow. I love it. When you think of a slum like the one behind me, you think of poverty, danger, and unemployment. That's what many people think when they see the third largest slum in the world, Dharavi in Mumbai, India. From above, it's where 1 million people live in tiny houses. But from below, this is much more than a slum. It's a place that generates $650 million every year. It's where I saw a huge recycling business, pottery business, leather, and garment business. This product was made in Dharavi, not Milan, not New York or Paris. Here, I struggled to find someone who was not working. Even inside houses, women were working. And those that were not, I found them cleaning. Because even with dirty roads and no toilets, houses are clean inside. Dharavi is an economic powerhouse filled with huge businesses, engineers, artists, and hard workers. It just so happens to be called a slum. That's 1 minute. See you tomorrow. क्या बात है यार? Hard working. Namaste! Namaste! It's my last day in India. And in the past few days, I have tried to become as Indian as possible. I dipped my body in their holy river, the Ganga. I ate, like many of them, vegetarian food. I visited their pink city, Jaipur, spiritual city, Varanasi, and their slum city, Dharavi. And I got arrested by their police for droning. I played their sport of cricket, helped in cleaning their parks, celebrated their Deepavali festival, learned from their smartest, and hung out with their richest. Heck, I even got married like many of them. But as much as I tried to become Indian, I realized one thing. This country has more than 1 billion people and 1 billion cultures. Yeah! And everything I did was only 1% of what India has to offer. With words, India is one of the most diverse, welcoming countries in the world. Without words, India is... That's 1 minute. यार ये तो एक्स्ट्रा वर्ड है। बहुत मजा आया यार वीडियो। यार इसने 8 मिनट में सारा भी दिखा दिया। डबल मजा। इसने नॉर्दर्न एरियाज वगैरह वो शिमला वगैरह वो तो देखे नहीं दिए। वो नहीं देखे। वो नहीं देखे। वो 20 डेज का कह रहा था, 8 डेज इधर। हाँ इधर 8 डेज है, शायद इसकी अगली वीडियो भी होगी नेक्स्ट। होगी मस्त है। बहरहाल जो भी इसने यहाँ तक दिखाया तो मजे का दिखाया। मजे का दिखाया यार। वो जो खाते हैं इंसानों को खा के वो समझ नहीं यार। यार वो बताओ यार, हमें भी बताओ यार क्या सीन है। वो मतलब खुद खाते हैं इंसानों को, वो जो बैठे हुए थे मैंने हड्डियां लटकाते हैं। हाँ मैंने नेशनल जियोग्राफिक पे या डिस्कवरी पे देखा था, एक बंदा फॉरेन कंट्री से आया था, वो गया था इनके पास गया था। अच्छा तो वहाँ भी ये सीन देखा तुमने? हाँ उन्होंने ना वो खा रहे थे, वो आ गया। ये तो कहता मुझे ना खा ले। तो आप ये बताएं क्या आपके मतलब रिलीजन के अंदर ये चीज है कि मतलब ये करते हैं ऐसा सीन है? क्या सीन है? क्या सीन है? मतलब ये जो आपके पादरी क्या कहते हैं, पादरी नहीं कहते? आप पादरी कह सकते हैं। मंदिर में जो होते हैं। नहीं मंदिर वाले नहीं। ये कौन है फिर? ये सिर्फ वही होते हैं स्पेसिफिक है मतलब। हाँ गंगा रिवर के साथ मतलब उसकी देखभाल करते हैं। नहीं मे भी वो कह रहा था कि एक्सट्रीमिस्ट है, जैसे एक रिलीजन के अंदर होते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज्यादा, ये वो चीज है। हाँ वो भी है। तो बहरहाल ये मतलब जैसे फिर हमारे मौलवी हैं जैसे वहाँ के मंदिर वो नहीं है, ये कोई और एक्सट्रीमिस्ट जैसे जो होते हैं वो पंडित तो वो हाँ पंडित तो मेरे नॉर्मली होते हैं। अच्छा दूसरी बात यार वहाँ के खाने तो यार हमेशा हम फैन, हम जितनी वीडियोस देखते अंदर खाने आ जाते हैं, फिर हमारा दिल करता है हम वीडियो एंड करते खाने ही आते हैं भाई। अभी हमने जाना है खाने, ठीक है। अच्छा तो तीसरी बात स्लम्स वाला यार, वो स्लम्स में यार स्लम्स से कहना नहीं चाहिए यार। हाँ वो लग ही नहीं रहा था यार। 6 7 पता नहीं कितने जीरो आते हैं, फिर जीरो है वो डॉलर इकोनॉमी में ऐड एनुअली कमाते हैं। उसने दिखाया भी हर घर के अंदर औरत लगी हुई है काम करने। देखो यार आपको हार्ड वर्किंग पीपल रह रहे हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, सारे एम्प्लॉयड हैं। मजे की बात लगी है यार,
मैंने तो वही सुना जैसे हमारे स्लम होते इधर ये वो बस झोंपड़ियां बनी हुई हैं, बस बैठे हुए बेचारे, कुछ बच्चों को भीख मांगने के लिए मतलब भेजा हुआ है। वैसा तो एक भी सीन नजर नहीं आया। नहीं वैसे भेजते इंडिया में भी ये होंगे, वहाँ पे बहुत होंगे, लेकिन ये जो ये स्पेसिफिक एरिया फॉरेन बंदे ने कहा था कि यार मुझे बड़ा मुश्किल हुई है ऐसे बंदे को ढूंढना है जो काम ना कर रहा हो। हर बंदा काम कर रहा। अच्छा चौथी बात ये कि उसका डांस कैसे लगा दूल्हे यार वो किसकी शादी में घुस गया यार भला? यार डांस बड़ा अलग, तो डांस तो किया पहले। मैं हैरान हूँ यार, उसको बेचारा कॉन्फिडेंस की दाद मेरे ख्याल है दूल्हे का उसने वो पहना होगा, शेरवानी पहनी होगी, और उसने जो है लड़की ने दुल्हन का लिया होगा किराए पे, ठीक है ना। उन बेचारों में इंतजार करवाया होगा पहले हमारी करवा लो फिर करते रहना, तो आप करते रहना। पर उनकी भी हिम्मत है, उन्होंने कह दिया चलो यार करो यार, इसका कॉन्फिडेंस लेवल वो तो है बड़ा यार जबरदस्त मजा है। बहरहाल मजा है, वीडियो पूरी का मजा है। अच्छे सीन थे, स्टार्टिंग का सीन बड़ा अच्छा था, कश्ती में काफी सारे लोग बैठे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे आई थिंक, या वो नजारा देख रहे थे उसका गंगा रिवर का। तो भाई इसका और भी आगे हैं तो मैं सजेस्ट जरूर करनी चाहिए, ठीक है। कोलकाता में आई थिंक ये गंगा रिवर। अच्छा सिटी का यार बताइए यार। बहरहाल जो भी है फरवरी में रिएक्शन एंड करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ इधर एंड करते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो गई है। तो गाइस एंड तक अगर आपने देखा तो आपने कमेंट लिखना है कि हमने एंड तक देखा है, तो आप मस्ट रिप्लाई करेंगे, आपको हार्ट पे सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने नहीं किया हुआ कर लो, ठीक है। और बस इसी का हमें दें इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें ऐसे ही प्यार करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।